अस्सलामुअलैकुम, आई एम एहतिशाम एजाज। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सेकेंड ईयर में से 2 चैप्टर को डिस्कस किया था कि एमयू पास पेपर में। आज जो है बाकी सारे जो चैप्टर रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एहतिशाम एजाज बायोलॉजिस्ट चैनल को सपोर्ट करें। आज के लेक्चर के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स में से कौन कौन से MCQs आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, क्रोमोसोम एंड DNA, इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी में से कौन कौन से MCQs थे उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स में से MCQs था, व्हाट इज फॉल्स अबाउट कार्टिलेज? ए, सेल आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। B, consist of type 2 collagen. C, heal very slowly. D, have an extensive blood supply. इनमें से कौन सा कार्टिलेज के बारे में दुरुस्त नहीं है? The correct option will be have an extensive blood supply. हम जानते हैं कि कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो हील होता नहीं है या तो स्लोली हील होता है। नेक्स्ट है, bones provide a rigid framework with an inorganic matrix. A, 35%, B, 45%, C, 55%, D, 65%. The correct option will be 65%. Next, an important feature of bone remodeling is bone breakdown. Which cell carries out this function? A, chondrocyte, B, osteocyte, C, osteoclast, D, osteoblast. The correct option will be D, osteoblast. दो तरह के सेल्स होते हैं, बोन डिसॉल्विंग सेल दैट इज कॉल्ड osteoclast और बोन फॉर्मिंग सेल दैट इज कॉल्ड osteoblast. कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो कार्टिलेजिनियस सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट जो हैं वो बोन के सेल्स होते हैं। Now, which of the following is an example of fibrous joint? A, elbow joint, B, skull suture, C, shoulder joints, D, intervertebral disc. The correct option will be skull suture. अक्सर औकात में बात करता था कि क्रेनियम के सूचर, तो वो स्कल सूचर हैं। 53. Which muscle type is under conscious control is multinucleated? कौन से आपके कॉन्शियस कंट्रोल में हैं और वो मल्टीन्यूक्लिएटेड हैं? A, स्मूथ मसल, B, कार्डियक मसल, C, स्केलेटल मसल, D, सिलियरी मसल. The correct option will be स्केलेटल मसल्स, जो मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हैं और आपके कॉन्शियस कंट्रोल में भी हैं। Next, myofibril consists of small contractile unit called A, sarcolemma, B, sarcoplasmic reticulum, C, sarcoplasm, D, sarcomere. The correct option will be sarcoplasm. Which part of the sarcomere contain both actin and myosin? जिसे हम पतले धागे और मोटे धागों का नाम देते हैं। A, आई बैंड, B, जी लाइन, C, ए बैंड, D, एच जोन। जिसने मसल की स्ट्रक्चर अच्छी तरह से पढ़ी हुई है उनको ये पता होगा कि आई बैंड क्या है, जी बैंड क्या है, ए लाइन क्या है और इसी तरह एच जोन क्या है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए बैंड। नेक्स्ट, the primary role of calcium ions in muscle contraction is to A, produce energy, B, carry nerve impulse, C, bind with troponin, D, break down ATPs. The correct option will be bind with troponin. Chapter nervous coordination में से है, the correct sequence of event in a reflex arc is A, receptor, associative neuron, sensory neuron, motor neuron, then effector. B, receptor, motor neuron, then associative neuron, sensory neuron, and at last effector. C, receptor, sensory neuron, associative neuron,
motor neuron, effector. D, receptor, sensory neuron, motor neuron, associative neuron, effector. तो आपको correct sequence में लिखना है. The correct option will be receptor, then sensory neuron, after there is associative neuron, and then motor neuron, and at the last effector. Next, touching a sharp object stimulates pain receptor. This information is carried to the central nervous system by the A, motor neuron, B, sensory neuron, C, associative neuron, D, effector neuron. The correct option will be sensory neuron. Next, जंक्शन जो है दो कंजक्टिव न्यूरॉन्स के दरमियान इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक. ए, नोड ऑफ रेनवियर, बी, एक्सॉन टर्मिनल, सी, साइनेप्स, डी, डेंड्राइट क्लेफ्ट. द करेक्ट ऑप्शन विल बी साइनेप्स. जो जंक्शन होता है उसको हम साइनेप कहते हैं. Now, which ion is tenfolded higher in concentration outside the membrane of neuron during resting potential? वहां पर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये फेनोमेनन भी होते हैं. ए, पोटाशियम, बी, सोडियम, सी, कैल्शियम, डी, हाइड्रोजन. द करेक्ट ऑप्शन विल बी सोडियम. नेक्स्ट, the state when a neuron is not conducting an impulse during resting membrane potential is called A, polarize, B, depolarize, C, repolarize, and D, hyperpolarize. The correct option will be polarized. Which of the following ways travel along the neuron during nerve impulse conduction? A, sound wave, B, magnetic waves, C, electromagnetic waves, D, electrochemical waves. The correct option will be electrochemical waves. Next, the reticular formation in the brain runs throughout which specific region? A, forebrain and midbrain, B, hindbrain and midbrain, C, cerebellum and forebrain, D, telencephalon and cerebellum. The correct option will be hindbrain and midbrain. Match the correct structure of the brain with its function. A, medulla breathing, B, pons memory, C, cerebellum dreaming, D, middle brain balance. तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी मेड्यूला ब्रेथिंग. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेसरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें से कौन सा ऐसा एसेसरी ग्लैंड नहीं है? ए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बी, सेमिनल वेसिकल, सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, डी, टेस्टिस. द करेक्ट ऑप्शन विल बी टेस्टिस, जो कि गुनेड से एसेसरी डक्ट नहीं है या एसेसरी ग्लैंड नहीं है. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहां पर होती है? ए, यूट्रस में, बी, ओवरी में, सी, वजाइना में, डी, फैलोपियन ट्यूब्स में. द करेक्ट ऑप्शन विल बी फैलोपियन ट्यूब. तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगी, देन उसके बाद मूव करेगा यूट्रस की तरफ. Which cell of the fallopian tube moisten and nourish the ovum? A, ciliated epithelial cell, B, non-ciliated epithelial cell, C, germ cells, D, endometrial cell. The correct option will be non-ciliated epithelial cell. Next chapter, chromosome and DNA. Excuse me.
The constricted region of chromosome that attaches to spindle fiber is called A. Telomere, B. Chromatin, C. Centromere, D. Nucleosome. The correct option will be centromere. Next, which of the Mendel laws can best explain why a child may inherit brown eyes even if one parent has blue eyes? So A. Law of dominance, B. Law of segregation, C. Law of independent assortment, D. Law of recombination. The correct option will be law of dominance. Next, what is the significance of the 9:3:3:1 in a dihybrid cross? A. It provides that all genes are linked. B. It demonstrates that traits assort independently. C. It indicates codominance between alleles. D. It confirms that mutation have occurred. The correct option will be it demonstrates that trait assort independently. वहां पर जो नियो फिनोटाइप्स आया था वो इसी वजह से आया था क्योंकि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए थे. Next, in crossing over, an exchange of material and paternal chromatid parts occur while homologous chromosomes are paired during day stage of meiosis. A. Metaphase 1, B. Prophase 1, C. Anaphase 1, D. Telophase 1. The correct option will be prophase 1. Next, linked genes do not follow Mendel law of assortment because A. They are located on different chromosomes. B. They always undergo crossing over. C. They are physically close together on the same chromosome. D. They rarely separate during meiosis. The correct option will be they are physically close together on the same chromosome. Next, a carrier female for an X-linked recessive disorder. A. Expresses the disorder fully. B. Cannot pass the disorder to offspring. C. Can pass the disorder to her sons. D. Only passes the disorder to daughter. The correct option will be can pass the disorder to her son. तो genetically disorder है जो अपने बेटे में जाएगा उसके. Next, which of the following is an X-linked recessive disorder in human? A. Cystic fibrosis. B. Hemophilia जिसके अंदर blood clotting नहीं होता. C. Thalassemia जिसके अंदर sickle cell anemia यानी सेल disorder है. The correct option will be hemophilia. Now, which of the following correctly describe the expected outcome of children from a carrier mother, the hemophilia XX and normal father XY? A. All son will have hemophilia. B. All daughter will be carrier. C. 50% of son will have hemophilia and 50% of daughter will be carrier. D. All offspring will be unaffected. The correct option will be 50% of son will have hemophilia and 50% of daughter will be carrier. खुद तो affected नहीं है लेकिन आगे child में disease फैलाएंगी. Chapter evolution में से the idea that acquired character are inherited is part of A. Darwinism, B. Neo-Darwinism, C. Lamarckism, D. Biogenesis. The correct option will be Lamarckism. तो ये थ्योरी लेमार्क ने दी थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं. मीन अगर माँ बाप डॉक्टर हैं तो बच्चे भी डॉक्टर होंगे, माँ बाप इंजीनियर हैं तो बच्चे भी इंजीनियर होंगे. ऐसा नहीं होता. इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था. नेक्स्ट है जी, साइंटिस्ट ने टेल काटी थी सेवरल जनरेशन में माइस की और उन्होंने देखा कि ये माइस की जो टेल है ये मिस नहीं हो रही. A. Darwinism, B. Neo-Darwinism, C. Lamarckism, D. Mutation theory. तो किस थ्योरी को इसने रिजेक्ट किया था? The correct option will be Lamarckism. तो Lamarckism ने कहा था कि ये करेक्टर ऐसे ही जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता.
चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इन सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन which two cells are fused to produce monoclonal antibodies. A. T cells and nerve cell. B. B lymphocyte and spleen cell. C. T cells and liver cell. D. B lymphocytes and macrophages. The correct option will be B lymphocyte and spleen cells. Next, molecular diagnostic. The primary function of DNA या RNA probes is to A. Replace malfunctioning gene in affected cell. B. Bind to specific DNA RNA sequence for identification. C. Cut genetic material at precise location. D. Stimulate immune responses against diseases causing organism. The correct option will be bind to specific DNA or RNA sequence for identification. Next, a set of uniform protein generated by genetically identical immune cells are A. Therapeutic protein. B. Immunoglobulin. C. Monoclonal antibodies. D. Recombination protein. The correct option will be monoclonal antibodies. लास्ट एमसीक्यूज है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है यूज होता है रिप्लेस एन एबनॉर्मल जीन इन अ पैशन सेल. ए. एंटीबायोटिक्स. बी. वैक्सीन. सी. वेक्टर. डी. इंटरफेरॉन. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट पूछा हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी वेक्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यहाँ पर आकर हमारा सारे 81 MCQs जो कि MU में डिस्कस हुए हैं सारे अपलोडेड हो जाएंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे MCQs को देखें और इनको अपने पास नोट करें एंड देन आपको काम आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.